Namaskar children, Aishwarya ma'am once again welcome you to your English class. Let us start our class with the prayer children. Join your hands, close your eyes. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your hands, put them on your eyes. And open your eyes slowly. Namaskar once again children. We hope that you are doing well at home. और उसके साथ साथ we also hope that you are doing your classwork and homework also. आप सबको धीरे धीरे जैसे भी आए, अगर कोई डाउट हो तो आपके मम्मा या आप हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, पर हमारे साथ क्लासवर्क और मम्मा के साथ होमवर्क फिनिश करते रहना है. Okay students, shall we start today's work? Let us start today's classwork children. Today's classwork and homework is in our Nurture Course A textbook. Which textbook children? Nurture Course A textbook. So please be ready with your pencil and eraser as you will be doing your classwork with me and homework with your mama. So last time in our last class, what did we do children? We did page number 11. Page number 11, we saw the letters, we saw their sound and we colored the vocabs. Then our next classwork page was page number 12, where we saw all the letters, their sound and circled the vocabs. Okay, page number 13 and page number 14 was your homework. Page number 13 and 14 was your homework. Now students, our today's classwork is page number 15 of our Nurture Course A book. Page number 15. So let us start children. You will write the date. You will write the date here. जिस डेट पे आप क्लासवर्क होमवर्क कर रहे हो वो डेट CW आपको लिखना है. ये अब आप अपने आप लिख सकते हो. You will write CW and date. So let us see the heading children. The heading says circle the pictures that begin with the given sound. आपको क्या करना है, हम ये साउंड्स देखेंगे, ये अल्फाबेट्स जितने भी लेटर्स यहाँ पे है उसके बिगिनिंग साउंड्स रीड करेंगे and then we will circle. We will have to circle. What do we have to do? Circle the vocab, the picture. Okay children, are we ready? Children, this pages number 11, 12, 13, 14 and 15 are the continue pages from A to Z. So we have already done 4 pages. Today we are going to complete A to Z last page of page number 15. Okay, let us start. Which letter is this children? This is letter V. And do you remember I have told you what is the sound of V? V says V. V says V. बोल के हमें छोड़ देना है. V says V. Okay, let us see the first picture children. Which picture is this children? What do you see in the picture? I see a cow, I see a doctor and I see a boy. Now do you see this cow children? How does she look? She looks sad. Yes, don't you see this? I see this cow is sad. And what is this doctor doing with the stethoscope? Yes, he is examining the cow. शायद काऊ के पेट में दर्द हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उसकी तबीयत ठीक नहीं है. So, this is the doctor who is examining the cow. और जो डॉक्टर एनिमल्स के देखभाल करते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उन्हें हम वेट बुलाते हैं. वेट. So children, when I say vet, do you hear the sound of V? V. Yes. Therefore, we will circle the picture of vet. Vet. Vet is a doctor जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं.
Okay, moving on to the next picture, children. Which picture is this? This is the picture of a vase. This is the picture of a vase. What do we use the vase for? Yes, we put the flowers in the vase. हम vase में flowers लगाते हैं. So, children, do you hear the sound of V? Vase, vase. Do you hear the sound of V? Yes, it is vase. Vase. So, I will circle the picture of vase. Okay, which is the third picture, children? Do you remember in the vocab E? Yes, we did the picture of engine. So, do you hear V when I say engine? Engine. No, it is the sound of E, letter E. Engine. Engine. Therefore, we will not circle this picture. Okay, moving on to the next letter, children. Which letter is this? Yes, this is capital and small letter W. W says W. W says W. Okay, children. Now, let us see the first picture. Which animal is this, children? We have seen him in the vocabs, in the flashcard. Which animal is this? This is a wolf. This is a wolf. And where do you see the wolves? We see the wolf in the jungle. It is a wild animal. Wolf is a wild animal. So, children, what do you hear when I say wolf? Wolf. Do you hear the sound of wolf? Wolf. Okay. So, what will we do, children? We will circle this picture. Wolf. Okay. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ वायलिन. हमने देखा था वायलिन जब हमने वी का वोकैब्स किए थे इन योर वर्कशीट. आई हैड टोल्ड यू व्हाट अ वायलिन इज. वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वायलिन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. बट व्हेन आई से वायलिन, डू यू हियर द साउंड ऑफ व? नो, वी हियर द साउंड ऑफ व. That means it is V. It is the vocab with the beginning letter V. Therefore, we will not circle this violin picture. Okay. And whose house is this, children? जैसे आप सब लोग घर में रहते हैं, हम सब घर में रहते हैं, वैसे ये किस एनिमल, किस इंसेक्ट का घर है? हमने ये vocab में देखा था, क्या आपको याद है? Yes, this is the house of a spider. House of a spider. And what do we say? We say web. We say web. So what do you hear when I say web? Do you hear the sound of W? Web. Web. Therefore, what we will do, children? We will circle the picture of web. 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 Okay. Next is letter X. Letter X. And what is the sound letter X makes? It says Okay. Let us see the first picture. Which picture is this, children? This is the picture of a wheel. 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 What do you hear when I say wheel? Yes, you are right. It is the sound of W. It is the sound of W. Therefore, we should not circle this picture. We should not circle this picture. Okay. Which number is this, children? Which number is this? Yes, you are right. This is number 6. This is number 6. What do you hear when I say 6? Do you hear the sound of x? 6. Yes. So what will we do? We will circle this 6. Okay, see the spelling of 6, children. 6. इसमें X का बिगिनिंग साउंड में नहीं आएगा, एंडिंग साउंड में साउंड आएगा आपको. 6. दैट इज द रीजन हमने 6 को सर्कल किया है. ओके. नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ अ बॉक्स. Now let us see how do we write box. I will write the spelling of box and you tell me where do you hear the sound of x. Where do you hear the sound of x? Okay, let us see. This is the spelling of box. Box. Where do you hear the sound of x? At the end. यहाँ पे x का साउंड दोनों पिक्चर में लास्ट में आता है, बिगिनिंग में नहीं आता है, लास्ट में आता है. बॉक्स. बॉक्स.
So we will circle the picture of the box. Okay, children. Next is letter Y. Y says Y. Y says Y. And which picture is this, children? This is the picture of a watch. हम watch कहाँ पहनते हैं? Wrist पे पहनते हैं. हम watch wrist पे पहनते हैं. So what do you hear when I say watch? Watch. It has the sound of W. So we will not circle this picture. This is the picture for letter W. Watch. Watch. Okay. Let's see the next picture. Oh yes, this is a... Which transport is this, children? Does this move on land? क्या ये land पे चलता है? No. क्या ये air पे चलता है? No. Is this a water transport? Yes, very good. Excellent. This is a water transport. And what is it called? It is called yacht. This is a yacht. Do you hear the sound of Y, yacht? Yacht. So children, we will circle this picture of yacht. Okay. Let's move. Next is the picture of a yolk. क्या ये आपको दिख रहा है बीच में? Yes, this is the egg. और ये egg में से अंदर से जो निकलता है उसे हम egg yolk बोलते हैं. Yolk. Do you hear the sound of y? Do you hear the sound of y? Yolk. Yolk. Therefore, we will circle this picture also. Now, which is the last alphabet, children? Yes, it is letter Z. Very good. And what is the sound letter Z makes? It says Z. It says Z. Let us see the first picture. Yes, it is a zip. It is a zip. आपके pouch में या फिर आपके फ्रॉक में, इन सब में, आपके बैग में हम जिप देखते हैं. हम जिप खोलते हैं, बंद करते हैं. Yes, what do you hear when I say zip? Zip. I hear the sound of Z. Zip. Zip. So I will circle this picture. Okay. Moving on to the next picture. Oh yes, this is a toy. This is a toy. But which toy is this, children? Do you know its name? Yes, it is a yo-yo. It is a yo-yo. But does it give me the sound of Z, children? Z. Z की आवाज आती है जब मैं यो-यो बोलती हूँ? नहीं. It starts with letter Y and it gives me the sound of letter Y. Therefore, I will not circle this picture. Oh, and which animal is this? Which animal is this? I see this animal in the jungle while I am seeing cartoon. और जब मैं Animal Planet का कोई भी मूवी देखती हूँ तो मैं zebra को उसमें देखती हूँ. तो zebra is a wild animal which lives in the jungle. It lives in the jungle. Do you hear the sound of Z? Zebra. Zebra. Yes, we hear the sound of Z. Therefore, we will circle this picture of zebra. So children, this was our page number 15. Our page number 15 जो आज class work था हमारा. Next page number 16. Now we will do page number 16. हम खाली यही पार्ट करेंगे. क्लास वर्क है हमारा ये. Okay. So what will we do first of all, children? हम क्या करते हैं before we start our class work homework? Very good. We write the date. We write the date. And this is our class work. ये 1, 2, 3 pictures जो है ये हमारा आज का class work है. बाकी का ये 3 picture and page number 17. Page number 17 is your homework. So shall we start? Let us see the first vocab. Oh, before that, let us read the heading. It says ending sound. It says ending sound. What does it say? Ending sound. ये सारे beginning sound थे. ये सारे beginning sound थे. अब हम करेंगे ending sound. Ending sound मतलब आपको इसमें ये जो letters है उसका end में आवाज आएगा. कहाँ पे आवाज आएगा? End में. That is why it is called ending sound. See, what does our heading say? Mark
द लास्ट साउंड, कौन सा साउंड? लास्ट, जो लास्ट में आता है वो साउंड ऑफ द पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमारे बुक में किया हुआ है. नाउ लेट अस सी व्हाट पिक्चर इज दिस चिल्ड्रन. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैट. बैट, व्हाट डू यू हियर व्हेन आई से बैट? सो हमने यहाँ पे बैट के साथ उसे, टी के साथ उसे मैच किया. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ, व्हाट डू यू हियर व्हेन आई से ब, ब, ब. Do you hear the sound of p? No. Do you hear the sound of b? Yes. T, b, t, b. So what will we do, children? We will match the picture to letter B. Letter B. Once again, children, hear the sound t, b, t, b. I hear the sound at the end of letter B. B, t, b. है ना? आपको जो मैं बोलूं उसका एंड वाला, लास्ट वाला साउंड पकड़ना है, रिकॉग्नाइज करना है और फिर उस पिक्चर को हम मैच करेंगे. ओके, लेट अस सी द थर्ड पिक्चर चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन, विच पिक्चर इज दिस? आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर में? यहाँ पे मिट्टी है, एक मैन खड़ा है और उसके पास स्पेड है. एंड व्हाट डू यू थिंक इज ही डूइंग चिल्ड्रन? Yes, he is digging. So, what do you hear, children, when I say the ig? The ig. I hear the sound of dig, dig, g, g. ये g है? No. Is this g? Is this g? No. Is this g? Yes. So, what will I do? I will match this picture to letter G. Dig. Dig. I hear the sound of g. लास्ट में हमने किसकी आवाज सुनी? ग की आवाज सुनी. Okay, so these three was your class work. Now let us see how to do your homework. Which is the first picture, children? Yes, this is the picture of a van. Van is a land transport. हम हर रोज स्कूल वैन में आते हैं, isn't it? आप स्कूल वैन में आते हो ना? Most of you come to school by van. So children, what do you hear at the end when I... So children, which sound do you hear in the end when I say an? An. I hear the sound of n. Van. N. Van. N. Is this n? No. Is this n? Yes. So I will match this picture to letter N. Again, listen how I am saying. Van. Van. I hear the sound of N in the last. Van. Van. Okay. Next picture is of a bed. Bed. What do you hear in the last? Bed. D का sound आया आप लोगों को? Is this D, children? No. Is this D? No. This is D. This is D. So what will I do, children? I will match this picture to letter D. D. Bed. Bed. Okay. Last is the picture of a ball. Ball. क्या साउंड आया लास्ट में आपको? Ball. Is this L? Is this L? No. Is this L? Is this L? No. Is this L? Yes. So I will match this picture to letter L. Ball. Ball. Okay. Now let us move on to our page number 17. Page number 17. Oh wow. What is this, children? This is a toy again. Top. 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 क्या सुनाई दिया लास्ट में? Top. P. Is this P? Is this P? No. Is this P? Is this P? No. This is P. So what will I do? I will match this picture to letter P. Top. Top. I hear the sound of P in the end. P in the end. Next is a school bus. School bus. What do you hear? Bus.
लास्ट में क्या आवाज आई? बस. Is this? Is this? No. Is this? Is this? No. This is S. S. So I will match this picture to letter S. Okay. अभी ही हमने देखा था ये picture when we were doing our class work, isn't it, children? What is its last sound? I hope अब आप लोगों को ये आ गया होगा. What do you hear when I say box? Box. Is this X? No. Is this X? नहीं. क्या ये X है? Yes. हमें X में X की आवाज आई. Box. Box. Got it, children? Okay. This is, which picture is this, children? This is a small baby. और ये उसके क्या है? मदर. ये उसके क्या है? मदर. क्या है? मदर. So children, when I say mother, what do you hear at the end? Mother. Mother. Do you hear the sound of r? Yes. And can you help me find r? Is this r? No. Is this r? Yes. So what will I do, children? I will match this picture to letter R. Mother. Mother. मम्मी को हम क्या बोलते हैं? Mother. Mother. लास्ट में क्या आवाज आई? R. Next picture is of a duck. Quack, 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 quack. So children, what do you hear when I say duck? Duck. K की आवाज आई हमें लास्ट में. Duck. Is this letter K? No. Is this letter K? No. This is letter K. आपकी बुक में स्मॉल लेटर के ऐसे है, पर हम स्मॉल लेटर के ऐसे लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, दिस इज द राइट वे विच इज गिवन इन अवर वर्कशीट ऑल्सो. तो हम स्मॉल लेटर के ऐसे लिखेंगे. सो आई विल मैच द पिक्चर ऑफ डक टू लेटर के. डक. डक. Got it, children? Okay. Our next picture, the last picture, is of a queen. Queen. What do you hear in the last? Queen. N, n, n. Is this letter n? Nahi. Is this letter n? No. This is letter n. Queen. Queen. So, what did we do, children, today? हमने सबसे पहले पेज नंबर 15 किया. What did we do on page number 15? We saw all the letters, we saw their sound और उनके vocabs को हमने सर्कल किया. This was our class work on page number 15. Okay, then we went to page number 16. Page number 16 जहाँ पे हमने फर्स्ट 3 एंडिंग साउंड वाले मैच किए. एंडिंग साउंड मतलब क्या बोला था मैंने? आपको एंड में, लास्ट में जो साउंड आता है उसको सुन के रिकॉग्नाइज करना है. एंड देन the next 3 pictures on page number 16 was for your homework. This is also ending letters along with page number 17. हमने full page homework में किया. और हमने इसमें क्या किया बच्चों? What did we do here? We heard the ending sound. जो लास्ट में साउंड आता है उसको हमने सुना. So children, please keep practicing your phonic sounds. जितने phonic sounds आप सीखोगे ज्यादा, जितने आप ज्यादा रिकॉग्नाइज करोगे, बोलोगे, उतना आपको ये सब वर्क इजीली आएगा. अगर आपको या मम्मा को कहीं पे भी कोई भी ट्रबल हो रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास. बी सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी. नमस्कार. Children, so let us play a very small but interesting game. Your parents can help you with this. Parents, what have I done here is on the plain A4 size paper or the craft paper if you have at home, I have drawn a simple maze. हमने एक छोटा सा simple maze draw किया है. आप कोई भी डिजाइन इसमें ले सकते हैं using a marker. And what else you will need is a zip bag or any transparent bag. This is a zip bag and a marker or button.
कोई भी बटन आप यूज कर सकते हो. सो पेरेंट्स, वंस यू हैव ड्रॉन योर मेज, एक बार आपने ये मेज ड्रॉ कर लिया, प्लीज पुट दिस पेपर इनसाइड द जिप बैग, इनसाइड द जिप बैग. So parents, here we have kept our paper in the zip bag. अब आप उनको कोई भी एक बटन दे सकते हैं and lock the zip bag, and we will lock the zip bag. Now parents, after you have locked the zip bag, you have given them the button at the start point. They will start the game. बच्चों, आपको क्या करना है, ये बटन को ऐसे धीरे धीरे आप इस बटन को इस मेज से ऐसे जाने देंगे. टर्न. नाउ आवर बटन इज गोइंग अप. ओह यस, इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम. अभी टर्न करना है, टर्न 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 टर्न, और धीरे 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 नीचे आ रहा है हमारा बटन. हमारी बटन की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. एंड अगेन एक टर्न लिया उसने, धीरे धीरे. नाउ गोइंग अपवर्ड्स. अरे वाह, दिस इज अ फन गेम. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस. कोई भी मेज आप ड्रॉ कर सकते हो और उसके साथ ये गेम खेल सकते हो. दिस इज अ motor skill activity which is very good for hand-eye coordination, and the winner is everyone. Yay! Did you enjoy this game, children? क्या हम वापस यहाँ से वापस स्टार्ट में जाएंगे? हम स्टार्ट से स्टॉप में आए, अब स्टॉप से वापस हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट में, रिवर्स जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट. हमारी गाड़ी चल पड़ी है एंड इट इज गोइंग स्ट्रेट 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 स्ट्रेट. देयर इज अ कर्व 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 कर्व, अनदर कर्व एंड आवर कार इज गोइंग स्ट्रेट. सीधी 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 गाड़ी. एक टर्न आया, टर्न 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 टर्न, अनदर टर्न. आगे 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 चल रही है हमारी गाड़ी. टर्न आया टर्न आया टर्न आया. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, गाड़ी पटरी से उतर रही है. टर्न टर्न टर्न, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट. वापस टर्न 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 टर्न, straight 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 straight, and race is finished. Yay! So children, did you see? It was a fun activity which you can try at home also. आप एक बटन यूज करो, दो बटन यूज करो, आपके फ्रेंड के साथ आप इसमें रेस भी लगा सकते हो. Hope you enjoyed this activity. Thank you once again.